Behind every journal entry and every balance sheet, there lies one simple equation. A is equals to C plus L. That is what we call as accounting equation. This accounting equation is the heartbeat of your whole accountancy. Understand it once and all your journals, your ledgers and even your trial balance will start making sense. Hello everyone and welcome back to the commerce element. In today's session, we will clear all the transactions of accounting equation in one shot. So come, let's proceed. The table is ready for you. Assets part contain cash, stock, debtors and others. Generally, majority of transactions आपको cash, stock and debtors के आएंगे. एक आध transaction may be furniture या machine का है that you can put in others column. Then you have capital and liabilities. Liabilities में you have two columns, creditors and others. The first transaction says that started business with 90,000 cash. Every transaction will at least affect two columns. So अब तक आपके पास कोई cash नहीं था. Now you will have 90,000 cash. बिजनेस में कैश आया मतलब बिजनेसमैन ने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया एंड thus 90 will be recorded in capitals column as well. The second transaction says that introduce cash 2000, stock of 5000 in business. Again आपने 2000 का कैश और 5000 का स्टॉक बिजनेस में इन्वेस्ट किया. So this time again कैश के कॉलम में 2000 कैश आएगा. You will have 5000 now in stocks column also because businessman ने introduce किया. Both of them together will be 7000 capital. And once you have two things in your equation, total it. So it will be 90 and 2, 92. This will be 5. यहाँ पे अब तक खाता नहीं खुला. This will be 97. ये दोनों खाते अब तक नहीं खुले. This will be termed as new equation. Then the third transaction says that purchase goods of rupees 1000. 1000 rupees के goods purchase किए. किससे किए? That is not given. So it is a cash transaction. Cash purchase करोगे. So cash will be reduced by 1000 and आपके पास 1000 rupees का stock increase होगा. And अगेन टोटल इट 92 कैश था उसमें से 1 पे कर दिया. सो यू विल बी लेफ्ट बैक विथ 91,000. 5000 का स्टॉक था 1 का परचेज किया. सो यू विल हैव स्टॉक ऑफ 6. ये खाते नहीं खुले एंड 97 एज इट इज एंड डैश ओवर हियर. अगेन यू विल पुट न्यू इक्वेशन ओवर हियर. The fourth transaction says purchase goods of 500 from Palak because the name is given. The transaction is credit transaction. जिनसे किसी से हम goods credit basis पे purchase करते हैं there are creditors. So goods purchase किए तो आपके stock में 500 increase होगा and अब तक you didn't had any creditor. अब you will have creditor of 500. Again total it. 91 will remain as it is. 6000 का स्टॉक था 500 का परचेज किया. You will have 6500 dash dash. This 97 will remain as it is. This will be 500 here again dash. Name it as new equation. The next transaction says that purchased furniture of rupees 1000. 1000 rupees का furniture परचेज किया. किससे किया? नहीं दिया. सो इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन. कैश में फर्नीचर परचेज करोगे तो 1000 रुपीज कैश रिड्यूस होगा. फर्नीचर नाम का एसेट बिजनेस में इंक्रीज हुआ बट वी डोंट हैव फर्नीचर्स कॉलम सो वी विल पुट इट इन अदर्स कॉलम. 1000 से अदर्स में फर्नीचर इंक्रीज हुआ. टोटल इट विल बी 91,000 था. 1000 कैश रिड्यूस हुआ. So you will be left back with 90. This will be as it is 6500 dash 1000. This will be 97,000 as it is. 500 as it is and dash and tell it as your
न्यू इक्वेशन। जैसे ही आप 2-3 ट्रांजैक्शंस कर लो, देख लो कि वेदर आपका A इज इक्वल्स टू C प्लस L मैच तो हो रहा है। सो 90 प्लस 6500 96,500 प्लस 1000 97,500 एंड C प्लस L मिला के भी 97,500 हो रहा है। अदरवाइज क्या होगा, लास्ट में जाके जब आपका इक्वेशन शायद टैली नहीं होगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द मिस्टेक। And at last I'll be telling you one hack also, जिससे आपका अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज टैली हो जाएगा। The next transaction says purchase furniture of 1000 from X furniture mart. Now this is a credit purchase of furniture. So again furniture का कॉलम नहीं, we will record assets के others में 1000 रुपीज का फर्नीचर एंड 1000 रुपीज की फर्नीचर की X फर्नीचर मार्ट के टूवर्ड्स लाइबिलिटी क्रिएट हुई। सो लाइबिलिटी के अदर्स के कॉलम में यू विल प्लेस 1000। क्रेडिटर्स स्पेयर रखो फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंट्री ओनली। उसके सिवा अगर कोई लाइबिलिटी है तो प्लेस इट इन अदर्स कॉलम। अगेन वी विल टोटल इट। 90 will remain as it is 90, 6500 as it is dash 1000 का था 1000 मोर का परचेज किया सो इट इज 2000, 97,000 as it is, 500 as it is, 1000 also as it is and again tell it as your new equation. Then the next transaction says that goods of ₹1000 returned to पलक। कुछ टाइम पहले हमने पलक से परचेज किया था, अब आप उसमें से 100 रुपीज के गुड्स उसको रिटर्न कर रहे हो, आप स्टॉक वापस दे रहे हो। सो योर स्टॉक विल हैव अ रिडक्शन ऑफ 100 रुपीज। पलक से जब गुड्स परचेज किए हमने पलक को क्रेडिटर बोला था, 500 से पलक से क्रेडिट बेसिस पे गुड्स लिए थे, 500 उसे पे करना वाज आवर लाइबिलिटी। अब हमारी लाइबिलिटी 100 रुपीज से रिड्यूस हो गई बिकॉज हमने 100 के गुड्स उसे वापस दे दिए एंड thus 100 will be deducted from creditors. Again total it, 90,000 will remain as it is, 6,500 के गुड्स थे 100 के रिटर्न दे दिए सो यू विल हैव गुड्स और स्टॉक वर्थ ₹6,400 लेफ्ट बैक डैश 2,000 as it is, 97,000 as it is, 500 का क्रेडिटर था उसमें से 100 गुड्स वापस दे दिए तो 100 से क्रेडिटर रिड्यूस हो गया सो यू विल नाउ हैव क्रेडिटर्स ऑफ 400 ओनली एंड दिस 1000 as it is and again tell it as your new equation. Moving on further with all sales related transaction, but before we start making entries make sure that ये जो भी new equation लास्ट वाला था उसको अगेन नेक्स्ट पेज में कैरी फॉरवर्ड करो सो दैट अगेन आप इक्वेशन को आगे बढ़ा सको। नाउ वी आर ऑल सेट टू गो फॉर न्यू ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹200, नाम नहीं दिया मतलब कैश सेल्स है, कैश से गुड्स सेल करोगे तो आपका कैश 200 रुपीज से इंक्रीज होगा एंड गुड्स सेल किए सो गुड्स का स्टॉक 200 रुपीज से रिड्यूस होगा। ऑलवेज जो अमाउंट माइनस करना है प्लेस इट इन ब्रैकेट। टोटल द इक्वेशन 90 प्लस 200 इट विल बी 90,200, 6,400 minus 200, 6,200 no effect, 2,000 as it is, 97 as it is, 400 also as it is and 1,000 as well. Name it as your new equation. Sometimes some book says this as accounting equation also. So जैसे आपकी बुक या जैसे आपके टीचर बोलते हैं name it as new or accounting equation. The next transaction says sold goods of ₹400 to Meeta. Because the name is given, the transaction is credit sales का transaction. जिस किसी को हम credit basis पे sale करते हैं, in this case Meeta, then that party becomes our debtors. So 400 के goods sale किए, so your stock will get reduced 400 से and now you will have
मीता नाम का डेटर विथ 400. टोटल इट 90,200 एज इट इज. 6,200 के स्टॉक में से 400 का स्टॉक सेल कर दिया. So you will be left back with 5,800 stock, 400, 2,000 as it is, 97, 400 and 1,000 all as it is. Say this is your new equation. Then sold furniture of rupees 200. Furniture 200 से सेल किया किसे? We don't know. So it is a cash transaction. 200 rupees कैश आपको मिला होगा. So cash will increase with 200. Because जब फर्नीचर परचेज किया हमने उसे अदर्स के कॉलम में पुट ऑन किया था. सेल करेंगे तो हम अदर्स के कॉलम में से उसे रिड्यूस करेंगे. एंड अगेन टोटल इट 90,200 plus 200, 90,400, 5,800, 400 and 2,000 minus 200, 1,800, and these all will remain as it is, 97,400 and 1,000. Name it as your new equation. Then the next transaction says goods of rupees 100 returned by Meeta. मीता को हमने सेल किया था, उसमें से 100 रुपीज के गुड्स वापस आ गए. सो योर स्टॉक अगेन इंक्रीज विथ 100 रुपीज. मीता ने गुड्स वापस दे दिए. सो योर डेटर विल गेट रिड्यूस्ड विथ 100 रुपीज. अगेन टोटल इट 90,400, 5,900, 400 minus 100, 300, 1,800 as it is, and this 3 will remain as it is. Again tell it as your new equation. The next transaction says sold goods of 200 for 300. 200 rupees के goods आपने 3 में सेल करे. Now see, 200 is the CP, cost price of the good, and 300 is the sales price of the good. Always remember that whenever you show stock, you will always be showing stock with your cost price. So 200 का stock sale किया, so 200 rupees will get reduced from your stock. 2 का stock 300 में sale किया, 300 rupees cash आया, so cash will increase with 300. था तो सिर्फ 200 का, बट हमने सेल 300 में किया, मतलब हमको 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ. नाउ दिस अकाउंटिंग इक्वेशन जस्ट कैरीज एसेट्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज कॉलम. दिस इक्वेशन इज नॉट हैविंग एनी स्कोप फॉर एक्सपेंसेस, इनकम्स, लॉसेस और प्रॉफिट्स. जो भी एक्सपेंसेस की एंट्री, लॉसेस की एंट्री, इनकम्स की एंट्री, गेन्स की एंट्री, whatever entries you have, that all will be given effect in capitals column only. So 200 के goods 300 में सेल करने से जो 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, उससे 100 रुपीज से ऑनर का कैपिटल इंक्रीज हुआ, and thus we will add it in capitals column, and again you will total it. 90,400 plus 300, 90,700, 5.9 minus 2, it will be 5.7, 300 as it is, 1,800, 97, 100, 4 and 1,000 as it is. Again name it as your new equation. Next one says that sold goods of 100 for rupees 200 to Raj. अगेन आपने 100 रुपीज के गुड्स 200 में सेल किए. 100 रुपीज के गुड्स मतलब 100 इज योर कोस्ट प्राइस, 200 में सेल किए मतलब 200 इज योर सेल्स प्राइस. दिस टाइम राज को सेल किए मतलब आपने क्रेडिट सेल किया. सो 100 रुपीज के गुड्स सेल किए, योर स्टॉक विल गेट रिड्यूस्ड विद कोस्ट प्राइस ऑफ 100 रुपीज. 200 में राज को दिए, सो राज बिकेम योर debtor with 200.
100 के गुड्स 2 में सेल किए तो आपको 100 का गेन हुआ. सो गेन या प्रॉफिट आप जो भी बोलो उसको हमने कैपिटल में ऐड कर दिया. अगेन टोटल एट 90,700, 5,600, 500, 18, 97, 200, 400 and 1000. Name it as again your new equation. Now moving on to the last level of accounting equation. Next transaction, salary paid 500. Always remember whenever you have the word paid and received in any of the entry in any of the chapter, that means the transaction is a cash transaction. So आपने 500 salary pay की, so 500 से your cash will get reduced. 500 will get reduced from capital. Again we will total it. It will be 90,200, 5,600, 500, 1,800. 97,200 minus 500. It will be 96,700, 400 and 1,000. Name it as new equation. Then the next transaction says that commission received 700. Because you have word received, that means it is a cash transaction. 700 commission receive करोगे तो 700 से आपका कैश इंक्रीज होगा. रिसीव किया मतलब इनकम हुई and thus capital वाला कॉलम will get increased with 700. Total it will be 90,900, 56 as it is, 500 as it is, 1,800 as it is. It will be 97, 400, 400 and 1,000. Name it as your new equation. Then the next transaction says that insurance premium is prepaid. Advance में पे कर दिया है. So पे तो कर दिया है. So your cash will get reduced with 300. अब आपने प्रीमियम एडवांस में पे कर दिया है तो आपको वो प्रीमियम रिसीवेबल है, वापस लेने का बनता है. ऑलवेज रिमेंबर योर रिसीवेबल्स आर योर एसेट्स. एसेट्स में रिसीवेबल के लिए वी डोंट हैव एनी अदर कॉलम, सो वी विल रिकॉर्ड दैट 300 इन अदर्स कॉलम. टोटल इट विल बी 90,600, 5.6, 500, it will be 2,100 now, 97, 400, 400 and 1,000 all as it is. Name it as your new equation. The next equation says rent outstanding is 200. अभी भी पे करना बाकी है. So because पे करना बाकी है आपका 200 रेंट becomes liability. सो आपकी लाइबिलिटी अदर्स के कॉलम में 200 से इंक्रीज होगी. एंड बिकॉज रेंट इज योर एक्सपेंस, पे किया कि नहीं किया, बट एज एन एक्सपेंस आपने रेंट को रिकॉग्नाइज तो किया. सो 200 से योर कैपिटल्स कॉलम विल गेट रिड्यूस्ड. एंड अगेन यू विल टोटल इट इज 90,600, 5.6, 500, 21, it will be 97, 200, 400 and 1,200. Name it as your new equation. Then the next transaction says interest due but not received 100. Interest due तो हो गया है, आपने अर्न तो कर लिया, पर अब तक आपको कैश में मिला नहीं. मिलने वाला है, that is it is your receivable and receivables are your assets. हमारे पास कोई separate column नहीं, so we will record it in others column. Receivable है मतलब 100 रुपीज का इंटरेस्ट आपने अर्न तो कर लिया, इनकम तो recognize हो गई and thus with 100 rupees your capital also will increase. Total it will be 90.6, 5.6, 500,
2200, 97,300, 400 and 1200 as it is. Name it as your new equation. The next transaction says commission received in advance is 200. Received word आया. Remember received या paid word आया, that is your cash transaction. Advance में मिल गया but cash तो मिला. So your cash will increase with 200 rupees. आपने कोई इनकम एडवांस में अर्न कर ली, आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का राइट नहीं. इट इज योर लाइबिलिटी टू पे बैक दैट इनकम. सो ऑलवेज रिमेंबर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज योर लाइबिलिटी. सो 200 से आपकी अदर्स वाली लाइबिलिटी इंक्रीज हुई. अगेन टोटल इट विल बी 90,800, 5.6, 500, 2200, 97,300, 400 and this will be 1400. I hope that the new set of incomes and expenses wale all transactions are clear to you. Now we are set to go with the last two transactions, which says that interest on capital 100. As per GAAPs, business and businessmen are two separate entities. And that is why businessman जो भी अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, बिजनेस उस पे बिजनेसमैन को इंटरेस्ट देगा. सो बिजनेसमैन के लिए 100 रुपीज की इनकम हुई. बिजनेसमैन की इनकम विल इंक्रीज 100 रुपीज कैपिटल. बिजनेसमैन को तो 100 मिला बट बिजनेस को 100 पे करना पड़ा. सो 100 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज बिजनेस का एक्सपेंस. And thus 100 will get deducted from capital. If we total it, it will be 90.8, 5.6, 500, 2.2, 97,300 as it is, 400 and 1400. Name it as new equation. And the last one says interest on drawings 200. बिजनेसमैन जो भी बिजनेस में से ड्रॉइंग्स करेगा, बिजनेस उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा. एंड दस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेसमैन के लिए एक्सपेंस है. बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, इट विल गेट डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल. बिजनेसमैन का तो एक्सपेंस था, कैपिटल में से डिडक्ट कर दिया, बट इट इज एन इनकम फॉर द बिजनेस एज वेल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू. एंड दस with 200 business की income increase होगी for interest on drawings. And like that 200 minus होगा as an expense of businessman, 200 add होगा as an income to the business and the effect will get neutralized. Total it for one last time, 9.8, 5.6, 500, 2200, 97,300, 4 and 1400. Tell it as new equation. Now you are done with all the transactions. Remember in the beginning I said that I'll tell you one hack जिससे आपका accounting equation always end में match होगा. So what is that hack? अगर आप कोई भी एंट्री एसेट में करते हो एंड उसका सेकंड पार्ट सी या एल में करते हो, तो अगर एसेट में डिडक्ट किया तो सी या एल जहाँ पे भी एंट्री करते हो वहाँ पे भी डिडक्शन होगा. यहाँ 500 माइनस किया तो यहाँ पे भी 500 माइनस करोगे. यहाँ पे अगर 700 एसेट में प्लस किया तो ऑपोजिट साइड सी या एल में भी 700 प्लस करोगे. बट अगर कोई एंट्री ऐसी है जिसके दोनों इफेक्ट्स एसेट्स में ही आ रहे हैं, देन एक बार एसेट में 300 माइनस किया तो वही एसेट में 300 प्लस भी करोगे. सो अगर आप एंट्रीज यहाँ पे करते हो एसेट्स एंड सी प्लस एल दोनों में से किसी में, तो अगर एसेट में माइनस किया तो सी प्लस एल में भी माइनस होगा. अगर एसेट में प्लस किया तो सी प्लस एल में कहीं ना कहीं प्लस होगा. बट अगर इफेक्ट आप खाली एसेट में देते हो देन एसेट में एक बार माइनस होगा, सेम अमाउंट एसेट में एक बार प्लस भी होगा. इफेक्ट अगर खाली सी प्लस एल में दे रहे हो
तो C प्लस L में एक बार अमाउंट माइनस हुआ तो दूसरी बार वो ऐड भी हुआ। अगर एवरी एंट्री के साथ साथ आप ये टैली करते जाते हो देन लास्ट में आपका अकाउंटिंग इक्वेशन A इज इक्वल्स टू C प्लस L फॉर श्योर मैच होगा। लास्ट में अकाउंटिंग इक्वेशन को टैली करने के लिए देयर आर टू वेज। वन इज सिंपली A इज इक्वल्स टू C प्लस L। A में जो भी है 90,800 प्लस 5.6 plus 500 plus 2200 is equals to C you have 97,300 plus you have 400 and 1,400. If you open the bracket it will be 99,100. A total of all of them is equals to 99,100 and like this you have proved it. The second variation can be in form of a balance sheet. So balance sheet is a statement showing your liabilities and assets. Your liabilities means C plus S. Even capital is your liability. To starting with capital नाम की liability which is 97,300. You have creditors नाम की liability with 400. And you have other liabilities 1,400. अगर एसेट्स में देखें तो you have cash of rupees 90,800, stock of 5,600, you have debtors of 500 and you have others में 2,200 and then if you match it you will have 99,100 as your assets and 99,100 as your C plus L, that is your liability as well. So any of the way whichever is preferred by your teacher you can close it with that. So in this session I have tried to cover all the transactions which can possibly be a part of your accounting equation. I hope everything is clear to you. Still, if you have any doubts, any questions, any queries, you can ping me in the comment section and I'll get back to you. Until the next session, stay tuned and goodbye.